Okay. Then we'll go to that division of elementary particle. So what is actually elementary particle? Anyone? So elementary particle is basically they are point particle. They cannot be break further. They do not have any internal structure, and they are subatomic nature. Okay. So if you write that definition of elementary particle, it will be so they are basically point particle. They cannot be break further. Okay. Sorry. They do not have any internal structure. They do not have any internal structure. And they are subatomic in nature. So they are basically subatomic particle. Okay. So what is the meaning of point particle here? What is the meaning of point particle? Rotation is not important. Sorry, your Puneet, your voice is not clear. Can you please repeat? I was saying that we are not concerned with any kind of rotation that is associated with the particles. Yes, point particle means, you know, subatomic particle has very small size. If you Yes, consider the case of proton, how much is the size of proton? It is of the order of 10 to 15 meter. So 10 to the power minus 15 meter. So the size of subatomic particle is very small, right? So what we can say that they cannot occupy any position in the space due to their very small size. They cannot occupy any position on the space. So that's why they are point particle, because their size is so small. Okay, that's why they cannot be break further. आप एलिमेंट्री पार्टिकल को कभी फर्दर अप ब्रेक नहीं कर सकते हो, फर्दर अप उसको तोड़ नहीं सकते हो. ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट ब्रेक इलेक्ट्रॉन फर्दर. इसका कोई और कंपोजिशन है नहीं, इलेक्ट्रॉन का फर्दर कोई कंपोजिशन नहीं है, यू कैन नॉट ब्रेक. ओके, दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर. एलिमेंट्री पार्टिकल का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बताओ, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप ब्रेक नहीं कर सकते हो. दूसरा आपका पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन को भी आप ब्रेक नहीं कर सकते हो. बट कैन बी प्रोटॉन ए एलिमेंट्री पार्टिकल? कैन बी प्रोटॉन ए एलिमेंट्री पार्टिकल? Is the question clear to all what I am saying? Yes, sir. Can proton be elementary particle? No. Electron can be elementary particle. So electron, proton both cannot be break further. आप इसको भी break नहीं कर सकते हो, इसको भी break नहीं कर सकते हो. But electron is elementary particle because it do not have any internal structure. But proton has internal structure. Proton is basically made up of okay. So कोई particle है, अगर break नहीं कर सकते हो but उसका internal structure है, so it cannot be elementary particle. So electron can be elementary particle, proton cannot be elementary particle. Similarly, neutron, you cannot break neutron, but it has internal structure. That's why it is not elementary particle. Pion, you cannot break pion further, but it has internal structure.
That's why it is not elementary particle. Okay. What is the meaning of their subatomic in nature? The meaning of subatomic is their size is smaller than the atomic size. For example, just now we have given that I have given that example. Size of proton, it is of the order of 10 to the power minus 15 meter. If you take the size of atom, it is of the order of Armstrong, right? So size of subatomic particle is smaller than the size of atom. That's why they are subatomic in nature. So this is the property of elementary particle. Can proton be subatomic particle? Can Yes, proton? sir. Yes, it can be subatomic particle because it has size smaller than the size of atom. It can be subatomic particle, but it cannot be elementary particle. Can electron be subatomic? Yes. The size of electron is smaller than the size of atom. It can be subatomic particle, and it is also elementary particle. Okay. So what is the conclusion? Conclusion is that all elementary particles are subatomic. For example, electron. This is subatomic as well as elementary particle. But all subatomic particle cannot be elementary particle. For example, proton. It is subatomic in nature, but it is not elementary particle. Okay. Is it clear? Is this concept clear to all what I'm saying? Sir, can you repeat last Yes. two sentence? Yeah, yes. So what I'm saying, the electron, you see the electron, you cannot break it, and it do not have any internal structure. So it is elementary particle. Also, the size of electron is smaller than the size of atom. So it is elementary particle as well as subatomic particle. Okay. But proton, the size of proton is smaller than the size of atom. So it is subatomic in nature, but it is not elementary particle. So conclusion is that all elementary particles are subatomic in nature, but all subatomic particle cannot be elementary particle. Is it Can clear you now? explain, sir, internal structure of proton? Can you repeat, sir? See, this part is actually is the end of particle physics, that is Quark model. So according to Quark model, all hadrons have internal structure. Hadrons means meson plus baryons. So I'll discuss this part. Just now I just given that example. If any particle has internal structure, then it will not be elementary particle. So actually the internal, how that internal structure came for proton, that is the end of discussion of particle physics, that is Quark model. So better that time I'll tell you that story, because I'll take a lot of time based on to discuss about this Quark model. So basically, if you see the composition of proton, it is made up of 3 quark, up, down, but you cannot break this quark. I mean, you cannot isolate up quark from this structure. So it has internal structure. It has 3 quark, but you cannot isolate. So it means you cannot break proton, but it has internal structure. Is it clear what I'm saying? You cannot isolate this up quark from here. So it means you cannot break proton, but it has 3 quark. It has internal structure. Okay. So Yes, this sir. is just the introductory of elementary particle definition. Now we'll categorize the division of elementary particle. So based on the common properties of subatomic particle, so I'll divide not elementary particle. So basically that classification, this will be the classification of subatomic particle, not elementary particle. So based on their common properties, we'll categorize this subatomic particle. Okay. So you have subatomic particle. Okay. So subatomic particle can be divided into 2 parts. One will be your lepton. So you have leptons. Okay. Then you have hadrons. Okay.
leptons and hadrons. Leptons do not have any internal structure, and they are basically low mass particle. The mass of leptons is small as compared to hadrons. So they do not have any internal structure. Okay. Okay. And their mass is small. Also, leptons are spin half particle. So leptons basically fermions. Okay. On the other hand, hadrons is made up of quark. So inside hadrons, you have two type of hadrons. You have anyone, Puneet, can you please tell me? Hadrons is basically nothing but you have hadrons, mesons, baryons. also you have baryons, right? And lepton is spin half particles, so obviously they are fermions, right? And the mass of leptons किस रेंज में लाई करते हैं बताओ? 0 to 135. 0 to 135 mega electron volt per c square. And leptons, there are 6 type of leptons exist in nature. One is electron, then electron neutrino, then you have muon neutrino, okay, then you have tau minus and tau neutrino. Okay, so what is the properties of lepton? Lepton, they are basically spin half particle. Their mass is in the range of 0 to 135 mega electron volt per square. किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? Actually, sir, what we have written down, it's not possible. Oh, okay. I'm writing upper side. Okay. So you have lepton. Lepton are basically 6 type. What are the type? You have electron lepton, then electron neutrino, neui. Then you have muon lepton, you have muon neutrino. Then you have tau lepton and tau neutrino. Okay, so there are basically 6 type of leptons. All are spin half and their mass is in the range of 0 to 135 mega electron volt per c square. Only exceptional is tau minor. What's the name of the third one? This is tau. TAU. Tau lepton. Third one. Mu. Sorry? Third one. This one. This is known as muon lepton. Electron lepton, electron neutrino, muon lepton, muon neutrino, tau lepton, tau neutrino. Okay. So what I'm saying, their mass is low, that is in the range of 0 to 135 mega electron volt per c square. But only exceptional, tau minus is so heavy, its mass is around 1786 mega electron volt per c square. So lepton में से ये आपका heavy है, and tau minus is actually unstable in nature. Okay, is it clear? So what you have learned from leptons? Leptons are basically spin half, so they are basically fermion. Lepton do not have any internal structure, so they are basically elementary particle. Okay, they have low mass. Only exceptional is tau minus. Tau minus is so heavy, its mass is 1786 mega electron volt per c square. So tau minus is only unstable from the lepton family. Is it clear now? Is it clear? Okay. Yes. Now we have hadrons. So I think आपको दिखेगा नहीं, मेरे को ऊपर ही लिखना पड़ेगा इसको, right? मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोगों को. So आप अपना कॉपी में लिखो ठीक से. So we have hadrons, right? We have hadrons, and hadrons is basically made up of what? Basically they are made up of quarks. So it means hadrons have internal structure. So they are subatomic in nature. Hadrons are subatomic in nature,
but they are not actually elementary particle. That's why I have given that heading, subatomic particle division. Okay, so hadrons have quark, is made up of quark. So inside hadrons you have meson. Sir, Yes. so you said that hadrons are made up of quarks, but they are not subatomic particles. No. I am saying that, you see, you cannot break hadron. Hadron, कोई भी hadron को आप break नहीं कर सकते हो further. But they have internal structure. They are made up of quark. So we cannot break hadrons, but they have internal structure. That's why they are subatomic particle, but they are not elementary particle. Is it clear? Okay, sir. Okay. So you have meson as well as you have baryons. You have meson as well as, yes. Sir, Yep. so the electrons and muons does not have any internal structure. All leptons do not have any internal structure. They are elementary particle. Okay. And Okay, also sir. photon do not have any internal structure. So photon is also elementary particle. Okay. Okay. Now you see meson. Meson is basically, there are two type of meson, but I'll show you here only pseudoscalar meson. But I'll discuss these two type of meson. There are two type of meson, only pseudoscalar meson. Pseudoscalar meson will have spin that will be 0. And vector, there is also exist vector meson. And vector meson has spin that is 1. But you see, for both meson, spin is integer, 0 or 1. So meson is basically what? They are basically boson. Okay. Did you get what I'm saying? There are two type of meson. One is pseudoscalar meson. For pseudoscalar meson, spin is 0. And there is also vector meson. For vector meson, spin is 1. But vector meson. Vector. Vector meson. Okay, don't worry, I'll discuss this part. So what I'm trying to say, that meson will have integer spin. Either it is 0 or 1. So all mesons are basically what? They are boson. Is it clear? So if you see, we have discussed about that leptons. Leptons are basically fermions. But mesons are basically what? They are basically boson. So if you see, there are meson, there exists pi plus meson. दिख रहा है आप लोगों को? Pi plus meson. They are also pi 0 meson. You have also pi minus meson. Then k plus meson. Then you have k0 meson, and you have eta 0 meson. Okay. So अगर कोई पूछे आपको कि pi plus boson है fermion से, it will be boson, right? So this belongs to meson family, and meson is basically what? They are basically boson. Okay. But here I have written pi plus, pi 0, pi minus, k plus, k0, eta 0. They are basically pseudoscalar meson. Okay. So there are two type of meson, pseudoscalar and vector meson. So here I have only written pseudoscalar meson, but I'll discuss about that vector meson also just after a few minutes. Okay. Then you have baryons. Now there are basically two type of baryons. What is that type actually? Nucleons, Nucleons and hyperons. electrons. And baryons is actually what? They are basically spin half particle. Yeah. So baryons will be what? They are basically fermions. So what is the conclusion? Leptons and baryons, they will be fermions, but mesons will be what? They will be boson. Okay. So baryons में spin half, आपका जो general baryons से उनका spin क्या होता है? Basically half होते हैं. सिर्फ एक्सेप्शनल किसका है? ओमेगा माइनस का. ओमेगा माइनस का स्पिन कितना होता है? 3/2 होता है. और जो आपका हेवी बैरियंस होता है उसका स्पिन कितना होता है? उसका स्पिन 3/2 होता है. बट ऑल आर हाफ इंटीजर. सो बैरियंस विल बी बेसिकली fermions. So if you divide baryons, you will have nucleon and you have hyperons.
आप लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. न्यूक्लियंस में क्या क्या है आपका? Proton. प्रोटॉन यू हैव, देन यू हैव न्यूट्रॉन. ओके, ठीक है. एंड यू हैव हाइपरॉन्स. हाइपरॉन्स में क्या क्या है? लैम्डा जीरो. Lambda 0 you have, then you have what? You have cascade plus, then you have cascade 0, then you have cascade minus, then sorry, extremely sorry, these are not cascade actually, these are actually sigma. Sigma plus, sigma 0, sigma minus. Then you have cascade 0. You have cascade 0. You have cascade minus. Okay, cascade minus, and finally you have omega minus. So we cannot see that, right? You cannot see. Okay, I'm writing here. मैं वही सोच रहा था आप लोगों को दिखेगा कि नहीं. Okay, so you have hyperons. अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So you have hyperons. So hyperons में क्या क्या है आपके पास? You have lambda 0. You have lambda 0. Then you have sigma plus. You have sigma 0. You have sigma minus. Then you have cascade 0. Then you have cascade minus, and finally you have omega minus. ठीक है, तो यहाँ पे जितना सारे बैरियंस लिखा है सारे का स्पिन कितना होता है? सारे का स्पिन ऑन नहीं, हाफ है. सारे का स्पिन हाफ है एक्सेप्ट किसका? इसका. इसका कितना होता है स्पिन? 3/2. 3/2. ठीक है, और जितना सारे आपने बैरियंस लिखे हो, दे आर नॉट हेवी बैरियन, दे आर एक्चुअली लाइट बैरियन. They are basically light baryon. I'll discuss about that heavy baryon also. Okay, after some time. So basically जो light baryons होता है उनमें सारे का स्पिन हाफ होते हैं एक्सेप्ट आपका ओमेगा माइनस का. उसका कितना होता है? 3/2. और जितना सारे आपके पास हेवी बैरियंस है वो सारे आपका स्पिन 3/2 होता है. बट ऑल आर एक्चुअली फर्मियंस. ओके, अनदर थिंग, इसमें जितना सारे बैरियंस दिख रहे हैं ओनली स्टेबल इज प्रोटॉन और सारे आपका अनस्टेबल है. तो कोई भी आपका बैरियंस है, ठीक है ना, कोई भी बैरियंस है वो क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा. एंड डीके का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा? प्रोटॉन का बनेगा. क्योंकि कोई भी इंटरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए? बैरियन नंबर को कंजर्व होना चाहिए, दैट आई विल डिस्कस. तो सारे बैरियंस बेसिकली अनस्टेबल है, इवन न्यूट्रॉन आल्सो. ओनली प्रोटॉन इज स्टेबल फ्रॉम द बैरियन फैमिली. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. By the way, what is the lifetime of neutron? So what is? What is the lifetime? How much is the lifetime of neutron? Uh, the 10 minutes. You approximate. It is of the order of, if you see, it will be 9:33 seconds. So now you can convert it into minute. I think 14 minutes around. Okay. So all baryons basically are unstable in nature except protons. Okay. So tell me if you have any doubt. Seconds or minutes, sir? Lifetime it is 9:33 second. S, Second. it is S. S means second. Okay. Sir, Yes. you said that proton is only stable and when the particles will decay, then proton will be there. This No, you no, no. said, no? Yes. Suppose मान लो कोई भी आपके पास बैरियन है तो डीके होता जाएगा. सपोज मान लो एक हेवी बैरियन है तो डीके होके कोई लाइट बैरियन में जाएगा, फिर वो लाइट बैरियन कोई दूसरा लाइट बैरियन में जाएगा, बट एंड प्रोडक्ट किसका बनेगा? प्रोटॉन का बनेगा. आपको क्या क्वेश्चन है बताओ? हाँ सर, यही था जो आपने कहा अभी. हाँ, और कोई डाउट है आपका? सर वेक्टर मेजोन की स्पिन क्या होती है? हाँ, वेक्टर मेजन का स्पिन ऑन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको. सो यू हैव, इफ यू हैव रिटन देन आई विल इरेज एंड आई विल गो. आपने लिख लिया इतना? क्या आपने लिख लिया इतना? Yes. Yes, sir.
अच्छा, जब टाइम हो जाएगा ना आपका नेक्स्ट क्लास का, मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलते क्लास में। So first we'll discuss one by one. So you have leptons, right? So first, now I'll discuss about the leptons and their antiparticles. So in leptons you have electron minus. So I'll discuss leptons. So first I'll discuss that particle. Then you will have spin. Then antiparticle. Antiparticle. तो कल का होमवर्क आप लोगों ने क्यों नहीं किया बताओ, पहले सबसे पहले क्यों नहीं किया कल का होमवर्क आप लोगों ने? चलो एक का तो पता चल गया कि नेटवर्क इश्यू था, बाकी का? सर कर लिया था, वो सेंड नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट सब लोग बताओ। सर मेरे को क्या, अच्छा आप लोग नहीं भेजोगे तो मेरे को क्या लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं सर, चलो, हाँ चलो आज करके भेजना। सो इन leptons you have electron, right? Spin is how much? Half. Antiparticle is क्या होता है लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन का antiparticle? positron. Positron. What will be the spin of positron? Same. Same. So basically पार्टिकल का जो स्पिन होता है एंटी पार्टिकल का भी स्पिन सेम होता है, ऑपोजिट नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूज होता है कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का स्पिन। सो व्हाट एवर विल बी द स्पिन ऑफ पार्टिकल, एंटी पार्टिकल का भी स्पिन वही होगा। सो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, ऑब्वियसली पॉजिट्रॉन का भी हाफ होगा। देन यू हैव इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, स्पिन अगेन हाफ, एंटी पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार, तो यहाँ पे आपका बार आ जाएगा, ठीक है, एंटीपार्टिकल के लिए। देन यू हैव म्यूऑन, स्पिन इज हाउ मच? हाफ, एंटीपार्टिकल इज म्यू प्लस, सो म्यू माइनस का प्लस हो जाएगा। देन यू हैव म्यूऑन न्यूट्रिनो, स्पिन इज अगेन हाफ, इसका एंटीपार्टिकल क्या हो जाएगा? न्यू म्यू बार। देन यू हैव टाउ माइनस, स्पिन अगेन हाफ, ओके, एंटीपार्टिकल इज टाउ प्लस। देन यू हैव टाउ न्यूट्रिनो, spin half, and antiparticle is nu tau bar. Is it clear? Is it clear? Sir, Clear please tell this fourth one. This one? Yes, sir. हाँ, म्यूऑन न्यूट्रिनो, न्यू मतलब न्यूट्रिनो है, so म्यूऑन न्यूट्रिनो spin is half, antiparticle is म्यूऑन न्यूट्रिनो बार, ठीक है, ऐसा है वो, न्यू म्यू, न्यू सबस्क्रिप्ट म्यू, ओके। क्या लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, नेक्स्ट sir. पार्ट। हाँ, देन यू हैव, Please wait. क्या हुआ, नहीं लिखे थे आपने? No, sir. Last tawan से नहीं लिखा हुआ था. ओके, मैं बता देता हूँ। ओके, सो यू हैव टाउ माइनस, ओके, स्पिन हाफ, एंटीपार्टिकल इज टाउ प्लस। देन यू हैव टाउ न्यूट्रिनो, स्पिन इज हाफ, एंटीपार्टिकल इज न्यू टाउ बार, ओके। इज इट क्लियर? Yes, sir. If you have written, I can erase this. Yes, sir. Done. Okay, so then you have mesons. So you have mesons, okay. So mesons, there are two type of meson that we have that I already told you. One is, so first you have A, that is pseudo-scalar meson. Pseudo-scalar meson, okay. In pseudo-scalar meson, if you see that J means spin, spin of pseudo-scalar meson J, P means parity. If you see, all pseudo-scalar meson will have zero spin, and that parity is how much? Odd. Minus means odd.
So in pseudoscalar, we'll have member of particle, members, then spin, then antiparticle. So first you have member, that is pi plus. Okay. Sir, Yes. please explain parity. Parity is minus. Parity minus मतलब odd parity होता है. Parity is like a intrinsic property. You know, suppose you have a parity operator. Okay. Then if you have a state psi, that is a function of r. Okay. So under parity operation, what will happen here? What will happen? Puneet, tell me. I minus Psi of minus. ठीक है. And if it is odd parity, then क्या होता है आपका? Minus of psi. minus psi. So similarly, कोई आपका pseudoscalar meson है. Pseudoscalar meson है. So each particle will have some eigenstate. ठीक है ना? Each particle will have some eigenstate. And वहां पे अगर parity ऑपरेट करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? माइनस psi r मिलेगा. So pseudoscalar state के लिए parity ऑपरेशन में माइनस मिलता है, उसीलिए उसको odd parity बोलते हैं. But this will be very good question if you ask me. If you ask me what is pseudoscalar, Yes. that nobody asked me. Okay, so pseudoscalar means, you see. Okay, let me give some time to all people, but this will be rough. Okay, so you have a scalar, right? You have a scalar, you have a vector, you have a pseudoscalar, you have a pseudo vector. अगर कोई scalar है, suppose मान लो you are operating some parity on scalar. You are operating parity on some scalar. If it is true scalar, suppose मान लो कोई density है, density of mass density. So if this is a true scalar quantity, under parity operation there will be no change in sign. It will be as it is. अब pseudoscalar में क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हेलिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं. अभी मेरे को मत पूछना कोई हेलिसिटी क्या है, क्योंकि ये मैं डिस्कस करूंगा. सो हेलिसिटी का जो डेफिनेशन है, projection of spin along the linear momentum direction divided by, sorry, extremely sorry, it is not like this, actually it's a mistake. S dot P, projection of spin of particle along direction of linear momentum divided by mod S mod. ठीक है, ये आपका हेलिसिटी है. तो देखो S डॉट P, तो ऑब्वियसली हेलिसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, राइट? S डॉट P, तो यहाँ पे हेलिसिटी क्या होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी, राइट? Yes, sir. तो हेलिसिटी स्केलर क्वांटिटी. अब हेलिसिटी में आप जरा पैरिटी ऑपरेट करो, आप चेक करो जरा. एस क्या है आपका? स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे लिखते हो? आर क्रॉस पी लिखते हो, राइट? ठीक है ना? Yes, sir. तो अंडर पैरिटी आर का क्या हो जाता है? Minus R. माइनस आर. पी का? Same. पी का माइनस पी हो जाता है, क्योंकि एम डी आर बाई डी टी लिखते हो आप. Okay. Yes, 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 yes. तो अंडर पैरिटी आर विल बी चेंज टू माइनस आर, पी विल बी चेंज टू माइनस पी. सो रिजल्टेंट कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा. No, sir. So R cross P में, so spin is basically can be written as R cross P. Under parity, R will be minus R, P will be minus P. So there will be no change on this part. So under parity, what I can say, there will be no change in spin direction, but there will be change in P. No? Am I correct? Sir, yes. एक बार फिर से बोलिएगा सर. हाँ देखो, ये आपका हेलिसिटी है, एस डॉट पी डिवाइड बाई मॉड एस बाई मॉड पी. सो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली हेलिसिटी विल बी स्केलर, नो डाउट अबाउट दैट. Yes, sir. एस इज व्हाट एक्चुअली? एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. बट एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन करते हो? आर क्रॉस पी के हिसाब से. Yes, sir. तो अंडर पैरिटी स्पिन का क्या कोई चेंज होगा? देखो, so now I am looking, so I am operating parity on helicity, so I have to check under parity what will happen to S, what will happen to P. So S can be written as R cross P. Under parity, R will be minus R, P will be minus P. So there will be no change in R cross P. So what I can say, there will be no change in S.
एस का डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, बट पी का क्या हो जाएगा, p will be minus p. So what I can say, what I can conclude, that under parity s will be not changed, it will be as it is, p will be minus p. So resultant will be what, h will become minus h. So देखो आपका हेलिसिटी स्केलर था, बट पैरिटी ऑपरेशन में क्या हो रहा है आपका, माइनस एच हो रहा है. सो हेलिसिटी इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज स्केलर बट नॉट ट्रू स्केलर, इट इज pseudo scalar. Is it clear what I am saying? Is it clear? क्या क्लियर है? Yes, हाँ. sir. Okay, so now at least you have learned about pseudo scalar and scalar. अब सपोज मान लो आपके पास वेक्टर है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ r, अंडर पैरिटी क्या हो जाएगा, पैरिटी ऑपरेशन में क्या होता है, माइनस आर हो जाता है. तो कोई वेक्टर का अंडर पैरिटी में माइनस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रू वेक्टर बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे देखो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, एल क्या होता है आपके पास, आर क्रॉस टी होता है. दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली क्या है आपका, वेक्टर है. सो आई कैन से एल इज वेक्टर. एल क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, राइट. बट पैरिटी ऑपरेट करके देखो आप, पैरिटी ऑफ, हाँ एक छोटा सा डाउट था yes. हाँ सर, अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम किया था हेलिसिटी वाला, उसमें सर जब हम लोग का हेलिसिटी माइनस आ रहा था, तो हेलिसिटी को हम लोग स्यूडो वेक्टर कह रहे थे, राइट? स्यूडो स्केलर एस डॉट पी है ना. ओके, स्यूडो स्केलर. हाँ, ओके आप जब हेलिसिटी को आप डिफाइन कर रहे हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो हेलिसिटी क्या हो गया, स्केलर हो गया ना. बट दिस इज नॉट ट्रू स्केलर. व्हाई? बिकॉज अंडर पैरिटी एज बिकम्स माइनस एज. So h is scalar, but it is not true scalar. It is minus. Sorry, it is pseudo scalar. Now you see angular momentum r cross p. So दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली ये वेक्टर है. बट अंडर पैरिटी देखो क्या हो जाएगा, r becomes minus r, p becomes what, minus p. So minus r minus p. So under parity there will be no change in sign of angular momentum. तो कोई वेक्टर का अंडर पैरिटी ऑपरेशन में अगर साइन का चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्यूडो वेक्टर बोलते हैं. ठीक है. तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ट्रू स्केलर क्या है, स्यूडो स्केलर क्या है, स्यूडो वेक्टर क्या है, तो आप बता सकते हो. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. सर एक बार लास्ट पॉइंट फिर से बताएंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू था. ओके, लास्ट पॉइंट क्या था आपका, अच्छा ट्रू वेक्टर आपको पता चल गया था ना. डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ट्रू. Yes sir, true vector I got it. ओके, नाउ यू हैव, सपोज यू हैव ए वेक्टर एंगुलर मोमेंटम. कैसे लिखते हो एंगुलर मोमेंटम को, r क्रॉस p लिखते हो. So there is a cross product of two vectors. So obviously L is your vector, right? Angular Yes, sir. momentum is vector because दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है. अब जरा पैरिटी ऑपरेट करो यहाँ पे, तो अंडर पैरिटी r क्या हो जाता है आपका, माइनस r हो जाता है, राइट. पैरिटी में r का क्या Yes, चेंज sir. होता है, माइनस r होता है. p का क्या Sign होता है, change होता है. p का भी माइनस p हो जाता है. Minus p. हाँ ठीक है ना. तो यहाँ देखो माइनस r माइनस p, इट बिकम्स r क्रॉस p. सो r क्रॉस p इज नथिंग बट l. सो जो वेक्टर अंडर पैरिटी कोई साइन नहीं चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो वेक्टर बोलता है. नाउ इज इट क्लियर? Okay sir. नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? Sir, in scalar that is reverse, huh? Huh? If the scalar is pseudo scalar, there will be no sign change, but it No. You reciprocal. see, you made there is a confusion here. स्केलर, ट्रू स्केलर का अंडर पैरिटी कोई साइन नहीं चेंज होता है. जैसे कोई मास डेंसिटी ले लो, उसका अगर पैरिटी ऑपरेट करोगे क्या चेंज होगा, उसका कोई मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पेस. ओके, सो इफ एनी स्केलर इज ट्रू स्केलर अंडर पैरिटी, देयर विल बी नो चेंज इन साइन. Example, mass density or uniform charge density, independent on space. But if any scalar under parity shows change in sign, example helicity, it is a scalar but under parity there is a change in sign, so it is pseudo scalar. Okay, then you have vector under if it is true vector under parity, it will change sign. If it is pseudo vector under parity, there will be no change in sign. Is it clear now? Is Yes, it clear now? Okay, so now you have members. So I have cleared. Now member, in member you have
pseudo scalar में क्या क्या आता है, पाई प्लस आते हैं, स्पिन कितना होता है 0, एंटी पार्टिकल पाई माइनस, देन यू हैव पाई 0, spin 0, antiparticle pi 0 bar, then you have pi minus, spin 0, antiparticle pi plus, then you have k plus, k plus means k on, spin 0, antiparticle is k minus, then you have k0, k on particle, spin is 0, antiparticle is k0 bar. Okay, and last is you have eta 0, eta 0, spin 0, and obviously antiparticle will be eta 0 bar. Okay, anyone has more? Eta 0 bar ना बोर्ड में नहीं आता. नहीं आ रहा है? No sir. Okay. Yes, sir. I'm writing here, no problem. So you have eta 0, spin 0, and antiparticle is eta 0 bar. Okay, is it clear now? Yes, sir. Now next part is, shall I erase? Next part you have, that is vector meson. Okay, in vector meson, if you see there spin j and parity, so it will be spin is there, spin is on, parity is odd. Okay, so they are basically true vector. Now if you see their member, so I'll write only few members from them. Members, spin, and antiparticle. Okay, so members you have rho plus, this is known as rho meson. Okay, spin is on, antiparticle is rho minus, then you have rho 0, spin again on, antiparticle is rho 0 bar, then you have rho minus, spin on, antiparticle is rho plus. Okay, is it clear? Yes, sir. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास में? Are you enjoying class, every people? Yes. Particle physics is really important, interesting actually. Okay, next part is, if you have written, I can erase. Have you Yes, sir. written? Yes. Next part is, you have baryons, right? You have baryons. एक्सक्यूज मी सर, जब सीडो स्केलर मेसोन्स लिखा था तो उसमें के मेसोन का सिर्फ के प्लस और के जीरो होता है, के नेगेटिव माइनस नहीं होता. Okay, pseudoscalar you can mention also. Yes, you can mention there also if you want. In place of pseudoscalar, you can mention k minus. Okay, spin will be how much? Half. Antiparticle will be what? K plus. You can mention. Okay. सर इसमें इसकी स्पिन हाफ होती है, जीरो नहीं होती. Oh, sorry. Extremely sorry. Sorry. Spin will be 0. Thank you. Spin will be 0. Okay. Okay. Now this is all about your meson. Now next part is baryons. Okay. And you have basically, first we'll discuss about baryons can have nucleons, right? So basically there are three types of baryons. One is nucleons, then you will have hyperons, then you will have heavy baryons. So I'll discuss one by one. So first nucleons, and if you see their members is and spin, then you will have antiparticle. Okay, so members means you have proton. Proton is stable, you can mention here.
Proton is very much stable. Spin is how much? Half. Antiparticle is proton bar. Then you have neutron. It is not stable. Lifetime is 933 seconds. Okay. And spin again half. Antiparticle is neutron bar, n bar. Okay. Is it clear? Have you written, everyone? Yes, Okay. sir. Okay. Next part you have, that is Sir, second. Yes. Newton is unstable. Its lifetime is 933 seconds. Yes. Sir, meaning it means what, sir? It means if you keep a neutron in free space, जैसे आपका लाइफ टाइम, जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ टाइम कितना होता है एवरेज 65 मानो, ठीक है ना? तो लाइफ टाइम मतलब समझ रहे हो ना, जन्म से उसका डेथ तक जो टाइम है, ठीक है ना? जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वहां से उसका डीके टाइम मतलब विद इन दिस टाइम, विद इन 933 सेकेंड it will be decay to other particle. Okay. Now next type of baryons that you have, that is hyperons. That is hyperons, and they are basically what? They are basically unstable. Okay. Okay. Now in hyperons, if you say their members and spin and their antiparticle. Okay. So members में बताओ क्या क्या पढ़े हम? Lambda 0, right? Spin is how much? Half. ठीक है. Antiparticle is lambda 0 bar. Then you have cascade plus. Spin is half. Antiparticle is cascade minus. Then you have extremely sorry, this is sigma. Sigma, this is all about sigma. Sigma plus, antiparticle sigma minus. Then you have sigma 0. अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का अबाउट देयर एंटीपार्टिकल. सिग्मा माइनस, सर यहाँ spin पे is half. सिग्मा 0 बार होगा ना? हाँ, सिग्मा 0 बार है. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, जैसे आपने लिखे हो सिग्मा प्लस, इसका एंटीपार्टिकल एक्चुअली क्या होना चाहिए? इसका एंटीपार्टिकल क्या होना चाहिए एक्चुअली? सिग्मा माइनस. सिग्मा माइनस होना चाहिए. अच्छा, पार्टिकल और एंटीपार्टिकल का एंटीपार्टिकल मास सेम होना चाहिए, राइट? जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का दोनों का मास सेम है, दोनों एक दूसरे का एंटीपार्टिकल है, राइट? Did you get what I'm saying? The mass of particle and antiparticle should have same mass. पार्टिकल का एंटीपार्टिकल का सेम मास होना चाहिए, राइट? बट सिग्मा प्लस का और सिग्मा माइनस का मास सेम नहीं है, दोनों का मास डिफरेंट है. तो इसीलिए सिग्मा प्लस का एंटीपार्टिकल सिग्मा माइनस नहीं हो सकता है. So it should be sigma minus bar. Okay. Similarly, sigma minus का एंटीपार्टिकल सिग्मा प्लस नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि इनका मास अलग है. So it should be sigma plus bar. Did you get what I'm saying? Okay. Then you have few और है कुछ. You have cascade minus. You have cascade minus. Sorry, cascade 0 first of all. Spin is how much? Half. Antiparticle will be cascade 0 bar. Next you have cascade minus, spin again half. Antiparticle is cascade plus. Okay. And you have omega minus. Spin is how much? Omega minus का spin कितना होता है? 3/2 होता है, right? What about antiparticle? Antiparticle इसको ऐसे लिखते हैं, omega plus bar. Okay, so this is your hyperons, right? Now, just I told you, you have some heavy baryons also. I'll write down their name and spin. So if you have written, I'll erase this part. Sir, Yes.
नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो गई. हाँ, नेक्स्ट क्लास की टाइम हो गया? यस सर. इतना जल्दी? 1 मिनट, कितने बजे से है नेक्स्ट क्लास आप लोगों का? 8:15 सर. 8:10 हो गए. ओके, तो कुछ हैवी बैरियंस है, उसका नाम लिख देता हूँ 2 मिनट में ना. जस्ट उसका नेम लिख देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए इजी हो जाएगा मेरे लिए. ओके. Please give me 2 minutes. So next part you have, that is heavy baryon. Heavy baryons. Okay, they are also unstable. They are also basically unstable. Okay, and if you see their members, तो baryons कितने तरह की होता है? बेसिकली 3 तरह की बोल सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव nucleons, then hyperons, then heavy baryons. Okay, you have members, then spin, then एंटी पार्टिकल. यहाँ पे डिस्कस नहीं करते जनरली, क्योंकि इसका एंटी पार्टिकल मिलता नहीं है. इसका जो मेंबर है डेल्टा डबल प्लस, इसका स्पिन कितना होता है? 3/2. देन यू हैव डेल्टा प्लस, स्पिन इज हाउ मच? 3/2. देन यू हैव डेल्टा 0, स्पिन इज 3/2. देन यू हैव डेल्टा माइनस, स्पिन इज 3/2. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव सिग्मा स्टार प्लस, इसका स्पिन कितना हो जाएगा? 3/2. याद रखना, ठीक है. सिग्मा प्लस का बेसिकली कितना होता है? हाफ होता है, बट सिग्मा स्टार प्लस का कितना होता है? 3/2. स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब दे आर बेसिकली फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट. स्टार हमेशा न्यूक्लियर फिजिक्स में देते हैं ये सिंबल ए स्टार. ए स्टार का मतलब क्या है? कोई न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है और एक्साइटेड स्टेट है, कोई न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ए स्टार. ओके, so star means they are basically found in excited state. Then you have sigma star 0, spin again 3/2. Okay, and you have also you have sigma star minus, spin is 3/2. Okay, and if you like cascade star 0, spin again 3/2, and cascade star minus, spin 3/2, and you have omega star minus, spin again 3/2. So this is all about your baryons. So today we have discussed about many subatomic particles. So if you have question, you can ask me, otherwise you can stop here. सर वो जो k माइनस लिखा था आपने, वो भी सूडो स्केलर में ही आएगा ना? हाँ, yes, k minus pseudo scalar. Yes. सर, आपने हेवी बेरियंस का जो फर्स्ट पार्टिकल लिखा था वो डेल्टा डबल प्लस लिखा था ना? Delta double plus, yes. Okay. So if you have तो ये question, हाइपरॉन्स में सिग्मा माइनस बार या फिर सिग्मा 0 बार, या बार तो क्या डिनोट कर रहे हैं? हाँ, बार मतलब एंटी पार्टिकल. जैसे आपका सपोज मान लो पाई 0 का आप क्या लिख रही थी? पाई 0 बार, नहीं ऐसे लिख रहे थे ना? तो सिग्मा प्लस का सिग्मा माइनस बार मतलब वो सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल. जस्ट एज ए सिंबल, प्रोटॉन को कैसे आप ये करते हो, पहचानते हो? पी से ना. तो उसका Yes, एंटी sir. पार्टिकल का एक सिंबल दिया गया है और कुछ नहीं है. ठीक है उसमें. ओके, Okay. so if you have any question you can ask me, otherwise you can stop here. So when we use these all particles, sir, existence of what? Sorry? When we use these all particles, Sorry? existence of these particles, sir, when we know. Okay, that is actually part of this. You are asking like how this particle came, right? Yes. This is due to heavy collision, high energy collision. You know you know about LHC, Large Hadron Collider. Do you know about this? No, sir. So basically कैसे एक नया पार्टिकल डिस्कवरी होता है?
जब दो हाई एनर्जी पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तभी आपका नया कोई पार्टिकल जनरेट होता है ना, से टू बॉडी कोलिजन। जब दो के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है तब एक नया पार्टिकल जनरेट होता है। सो बेसिकली you just search about LHC, Large Hadron Collider. Okay, so they are producing that new particle. ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है? बेसिकली बाय कोलिजन ऑफ टू हाई एनर्जेटिक पार्टिकल यू विल गेट नया पार्टिकल आपको मिलता है ना। सो आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, धीरे धीरे आपको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, Thank you, sir. ओके, वी शुड स्टॉप हियर। ओके, Thank you.